Hello everyone. In previous class, we discussed about the phasor diagram and the equivalent circuit of synchronous motor. We also discussed the conditions for synchronous motor like normal excitation, under excitation and over excited condition of synchronous motor. So in this lecture, we will study about what is the direct axis and quadrature axis, subtransient, transient and steady state reactance of the synchronous machine. After this we will move to the next topic, single phase synchronous motor and its classification. The next topic is hysteresis motor and reluctance motor. What is it, or construction as well as the working of these motors. And finally, the references of this presentation. So in this lecture, we cover all these topics one by one. So let's start with topic 1. Direct axis and quadrature axis sub-transient reactance of synchronous machine like XT and XV. To understand the behavior of an alternator, means synchronous generator, under transient conditions, the armature and the field resistance is assumed to be negligibly small. Thus, the constant flux linking theorem can be applied. As per this theorem, in purely inductive circuit, the total flux linking cannot be changed instantaneously at the time of any disturbance. Now, if all three phases of unloaded alternator with normal excitation are suddenly short-circuited, there will be short-circuit current flow in the armature. As the resistance is assumed to be zero, this current will lag behind the voltage by 90 degree and the MMF produced by this current will be along the D-axis. एक्चुअली ये भी जो भी हम ये रिएक्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द सैलिएंट पोल मशीन. इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन सैलिएंट पोल मशीन, क्योंकि नॉन सैलिएंट पोल जो हमारी मशीन होती है उसका रोटर सिलेंड्रिकल होता है, स्टेटर और रोटर के बीच का एयर गैप यूनिफॉर्म होता है, इसलिए रिएक्टेंस भी उसमें यूनिफॉर्म होता है. बट इन केस ऑफ सैलिएंट पोल मशीन, अलॉन्ग द पोल और बिटवीन द पोल जो एयर गैप होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, जिससे हमारा दो रिएक्टेंस हमें मिलते हैं, जिसको हम एक को हम डायरेक्ट एक्सेस में कंसीडर करते हैं और दूसरे वाले को हम क्वाड्रेचर एक्सेस में कंसीडर करते हैं. The first conclusion is that this current will be affected by D-axis parameter like XD, XD dash and XD double dash only. What is XD? XD is called the direct axis reactance, or we can say that direct axis steady state reactance. XD dash is direct axis transient reactance and XD double dash is direct axis sub transient reactance. जिसमें डैश नहीं लगा है वो स्टेडी स्टेट कंपोनेंट है, जिसमें डैश लगा है वो सिंगल डैश है जिसमें वो हमारा ट्रांजिएंट है, और जिसमें डबल डैश लगा हुआ है वो हमारा सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है, जो कि हम इन रिएक्टेंसेस को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द स्लिप टेस्ट, और ये टेस्ट का डायग्राम आप देख सकते हैं. फर्दर देयर विल बी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ दिस करंट, बट as the flux linkage with field cannot change, the effect of demagnetizing armature MMF must be counterbalanced by a proportional increase in the field current. This is the diagram for experimental setup for determining XD double dash and XQ double dash.
The additional induced component of the field current gives rise to greater excitation in the transient state and the result in more short circuit as compared to the steady state short circuit current. If the field poles are provided with the damper bar, then at the instant of three-phase short circuit, the demagnetizing armature MMF induced current in the damper bar, which in turn produce field in the same direction as the main field, and hence at this instant the excitation further increase and gives rise to further increase in short circuit armature current. This is for a very short duration, normally 3 to 4 cycle, and this period is known as sub-transient period. अब ये जो हमारा बहुत जल्दी वेरिएशन हो रहा है, ये आप देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू वाला इतना जो पीरियड्स है जिसमें 1, 2 और 3 साइकिल आ रहा है, जिसमें वेरिएशन बहुत ही जल्दी हो रहा है, इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं सब ट्रांजिएंट पीरियड। और इसमें जो हम टाइम कांस्टेंट निकालते हैं उसको बोल देते हैं सब ट्रांजिएंट टाइम कांस्टेंट। सिमिलरली ट्रांजिएंट पीरियड में अब जो हमारा जो वेरिएशन होता है वो कंपेयर टू सब ट्रांजिएंट थोड़ा कम होता है और स्टेडी स्टेट से थोड़ा ज़्यादा होता है। ये जो रेड वाला पोर्शन आप यहाँ तक देख पा रहे हैं, इस जगह तक जहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है वेव का, एम्पलीट्यूड है, वो चेंज हो रहा है, बट सब ट्रांजिएंट के कंपेयर में थोड़ा कम हो रहा है, तो इस पीरियड को हम बोलते हैं ट्रांजिएंट पीरियड। और इस पीरियड में जो हम टाइम कांस्टेंट निकालते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट टाइम कांस्टेंट। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, जो हमारा मैग्नीट्यूड और एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट हो जाता है वेव का, उस पीरियड को हम बोल देते हैं स्टेडी स्टेट पीरियड। वही हम इसमें देखने वाले हैं। सो फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, नॉर्मली 3 to 4 cycle, and this period is known as the sub transient period, since the field voltage is constant and there is no additional voltage to sustain this increased excitation during sub transient or transient period. Consequently, the effect of increased field current decrease with the time constant determined by the field and armature parameter, and accordingly the short circuit armature current also decay with the same time constant. So this is the symmetrical short circuit of an alternator. यह हम बोल सकते हैं फॉल्ट करंट के बारे में, हम इसमें देख सकते हैं फॉल्ट करंट का वेव फॉर्म। इसमें सब ट्रांजिएंट पीरियड, ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट तीनों पीरियड मैंने आपको रिप्रेजेंट किए हुए हैं। In the figure, a symmetrical wave form for armature short circuit current of phase A. The DC component is 0 in this phase. The reactance offered by the machine during sub-transient period are known as sub-transient reactance. Along the direct axis, it is direct axis sub-transient reactance, represented by XD double dash, and along the quadrature axis, it is the quadrature axis sub-transient reactance, represented by XQ double dash. तो जो सब ट्रांजिएंट पीरियड में हमें रिएक्टेंस ऑफर्ड होता है अलोंग डायरेक्ट एक्सेस, उसको हम XD डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्ट एक्सेस सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस बोलते हैं। और जो हमें रिएक्टेंस ऑफर्ड होता है सब ट्रांजिएंट पीरियड में अलोंग क्वाड्रेचर एक्सेस, उसको हम क्वाड्रेचर एक्सेस सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं XQ डबल डैश। ट्रांजिएंट को मैंने डैश सिंगल डैश से रिप्रेजेंट किया है और सब ट्रांजिएंट को डबल डैश से रिप्रेजेंट किया है, और स्टेडी स्टेट में कोई डैश नहीं, XD और XQ ही यूज किया है। As these reactants are due to the fact that the flux linkage in field circuit during sudden disturbance remain constant. The sub-transient reactants XD double dash and XQ double dash can also be defined as well. First one is the direct access sub-transient reactance XD double dash. The field
structure is assumed to have a damper bar on salient poles, the field winding is initially unexcited and is short-circuited so that the field flux linkage is zero. The armature current now are suddenly applied in such time phases that that peak of bearing armature MMF wave is in direct axis as per constant flux linkage theorem, since the flux linking before this is zero. So this is the diagram for flux path for direct axis subtransient reactance XD double dash. Hence, it remains zero just after the application of armature MMF wave, and in order to maintain the flux linkage zero, the current are induced in damper bar and the additional rotor circuit formed by the pole body, etc. And the field winding. The field of the bearing armature MMF is forced to drive the flux through the leakage paths, mainly in the air, as shown in figure 3. This is the figure. The flux path for D-axis subtransient reactance XD double dash. The armature flux linkage per ampere under these conditions is known as the direct axis subtransient inductance, represented by LD double dash. इस कंडीशन में जो हमें ये इंडक्टेंस ऑफर्ड हो रहा है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस सब ट्रांजिएंट इंडक्टेंस, रिप्रेजेंट करते हैं एलडी डबल डैश. Next is a quadrature axis subtransient reactance XQ double dash. This is also defined in a manner similar to XD double dash, but in this case the armature current applied in such time phase that the peak of varying armature MMF wave is along with the quadrature axis, not a direct axis. So in a diagram, show the varying armature MMF wave. The damper bar is the quadrature axis force the field of the varying armature MMF to follow the leakage path as shown in figure 4. So this is the figure 4 flux path for Q axis subtransient reactance XQ double dash. As before, the flux linkage with the Q axis damper bar must remain constant, that is 0, before and after the sudden application of armature MMF under these conditions. The armature flux linkage per ampere is known as the Q axis subtransient inductance, represented by LQ double dash, and XQ double dash is equal to omega into LQ double dash, where XQ double dash is called the quadrature axis subtransient reactance, and LQ double dash is equal to Q axis subtransient inductance. To determine the XD double dash and XQ double dash means direct axis and quadrature axis subtransient reactance in the laboratory, the above mentioned conditions are created there. Two phases of the three-phase alternator are connected in series and the combination is connected
to a low voltage single phase supply. So this is the experimental diagram for determining or determine the XD and XQ double dash. And field winding is short circuited. So in this diagram कोई भी दो फेज को हम क्या करेंगे, कोई भी दो फेज को कंबाइन करके सिंगल फेज सप्लाई के थ्रू हम लो वोल्टेज सप्लाई थ्रू ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू हम इसको देंगे और फील्ड वाइंडिंग को हम जो है वो शॉर्ट सर्किट कर देंगे। इस सर्किट डायग्राम के थ्रू वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ XD एंड XQ डबल डैश। The rotor is rotated and brought along the D axis once, and XD double dash can be calculated from the armature current and voltage per phase of the armature in this position. Next, rotor is brought along the Q axis position and XQ double dash is determined. The next topic is single phase synchronous motor and its type. There are different type of synchronous motors based on the way they are excited. Non-excited synchronous motor and current excited synchronous motor. Let us take a look at the different type one by one. Actually synchronous motor जो है उसको अगर हम on the basis of their excitation पे classified करें, so there is two type, non-excited synchronous motor and current, or we can say that DC current excited synchronous motor. तो जो नॉन एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है इसके जो है वो तीन टाइप होते हैं, जिसमें कि हिस्टेरेसिस मोटर, रिलक्टेंस मोटर एंड परमानेंट मैग्नेट मोटर्स आती हैं। So first category is non-excited synchronous motor. The rotor is made up of steel. The external magnetic field magnetizes the rotor and it's rotate in synchronism with it. The rotor is generally made of high retentivity steel such as cobalt steel. Non-excited motors are available in three design, or we can say that the non-excited motors are classified into three categories. First one is called the hysteresis motor, second one is reluctance motor, and third one is permanent magnet synchronous motor. ये जो सारी मोटर्स हैं ये नॉन एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर की कैटेगरीज में आती हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं इनको। So next is the hysteresis motor and reluctance motor. So first one is hysteresis motor. Hysteresis motor are single phase motor in which the rotor is made up of ferromagnetic material. The rotors are cylindrical in the shape and have high hysteresis loss property. हिस्टेरेसिस लॉस आप लोगों ने जो ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा है वही सेम टू सेम है, मींस कोर बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने से जो लॉस होते हैं उसको हम हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं, जिसको हम मैग्नेटिक मटेरियल का अगर हमें हिस्टेरेसिस लॉस निकालना है तो हम उसका हिस्टेरेसिस लूप का एनालिसिस करते हैं। दे आर जनरली मेड अप ऑफ क्रोम कोबाल्ट स्टील और एल्निको. The stator is fed by single phase AC supply and the stator has two winding. First one is a main winding and second one is a auxiliary winding. इसको auxiliary winding हम इसलिए देते हैं ताकि ये मशीन जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग हो सके।
The combination of the two means main winding and auxiliary winding produce a revolving magnetic field from a single phase supply. They are self-starting and do not need additional windings. When single phase AC supply is given, a rotating magnetic field is produced. This rotating magnetic field induced eddy current in the rotor. So this is the diagram for hysteresis motor. This one is called the auxiliary winding. This one is called the auxiliary winding, and this one is called the main winding. शेडेड करके जो लिया हुआ है उसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग बोला है, और जो नॉर्मल लिया हुआ है विदाउट शेड उसको हमने मेन वाइंडिंग बोला है. दिस इज कॉल्ड द स्टेटर एंड दिस वन इज कॉल्ड द रोटर ऑफ द मोटर, एंड दिस इज कॉल्ड द हिस्टेरेसिस लूप, or we can say that the BH curve. The rotor starts to move initially with a slip. When the rotor reaches synchronous speed, the stator pulls the rotor into synchronism. So initially the motor starts as an induction motor and later run as a synchronous motor. तो hysteresis motor भी जो start होती है वो induction motor की तरह start होगी और बाद में run होगी synchronous motor की तरह, जब दोनों का रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मीन स्टेटर और रोटर के बीच में जब मैग्नेटिकली लॉकिंग हो जाएगी तब वो रन करेगी एज अ सिंक्रोनस मोटर की तरह. Advantages of hysteresis motors. The main advantages of hysteresis motor are as no teeth and no winding in rotor, so no mechanical vibration take place during its operation. Next, its operation is quiet and noiseless as there is no vibration. Next one is, it is suitable to accelerate inertia load. Next, multi-speed operation can be achieved by employing gear train by using hysteresis motor. So these are some advantages of hysteresis motor. Disadvantage of hysteresis motor. So the drawbacks of hysteresis motors are, hysteresis motor has poor output, that is 1/4 of the output of an induction motor with the same dimension. Its efficiency is low and the torque production is also low. This type of motor is available in very small size only. It is not applicable for large rating or large size. So these are some drawbacks of hysteresis motor. Next one is a reluctance motor. The reluctance motor is based on the principle that an unrestrained piece of iron will move to complete a magnetic flux path where the reluctance is minimum. The stator has the main winding and the auxiliary winding just like the hysteresis motor. These help to create a rotating magnetic field. The rotor of a reluctance motor
is a squirrel cage rotor with some teeth removed to provide the desired number of salient poles. The reluctance becomes minimum when the rotor is aligned with the magnetic field of the stator. When single phase AC supply is given, the motor starts as an induction motor. The rotor tries to align itself with the magnetic field of the stator and experiences reluctance torque. But due to inertia, it exceeds the position and again tries to align itself during the next revolution. In this manner, it starts to rotate. Once it reaches 75% of synchronous speed, the auxiliary bindings are cut off, and when the speed reaches synchronous speed, the reluctance torque pull it into synchronism. The motor remains in synchronism due to synchronous reluctance torque. So this is all about regarding synchronous reluctance motor. The next one is permanent magnet synchronous motor. ये जो क्लासिफिकेशन चल रहा है ये हमारा चल रहा है नॉन एक्साइटेड मोटर्स का, जो कि तीन टाइप की होती हैं: हिस्टेरेसिस, रिलक्टेंस एंड परमानेंट मैग्नेट. सो थर्ड वन इज परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर. द रोटर इज मेड अप ऑफ परमानेंट मैग्नेट. बस इतना ही डिफरेंस है, इसमें जो रोटर होता है वो परमानेंट मैग्नेट का हम बना देते हैं. दे क्रिएट अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स. द रोटर flux in synchronism when the speed is near synchronous speed. They are not self-starting and needed electronically controller variable frequency stator drive. तो इसके लिए हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस या डिवाइसेस का यूज करना पड़ता है, क्योंकि ये जो परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर है ये हमारी सेल्फ स्टार्टिंग मशीन या मोटर नहीं है. So this is the diagram for permanent magnet synchronous motor. The rotor is made up by permanent magnet. Number 2 is direct current excited motor. The direct current excited synchronous motor need a DC supply to the rotor to generate rotor magnetic field. A direct current excited motor has both stator winding as well as the rotor winding. They can either have cylindrical rotor or salient pole rotor. They are not self-starting and need damper winding to start. Initially, they start as an induction motor and later attain synchronous speed. तो ये जो डायरेक्ट करंट एक्साइटेड मोटर होती हैं, इसमें दोनों वाइंडिंग यूज होती हैं, आर्मेचर वाइंडिंग एज वेल एज द फील्ड वाइंडिंग. स्टार्ट होती है ये वाली मोटर एज अ इंडक्शन मोटर की तरह और अटेन करती है देयर सिंक्रोनस स्पीड. Now the next topic is the references of this presentation. So these are the references. And thank you for watching this video.